Okay. Good morning, students. Uh, let's start with our lecture. Let's give a minute to open the page. Okay, so I think so we were on forgetting. एक minute. Yes, we are on forgetting. And this also. Okay, so forgetting. So think of the following situation. Have you ever experienced the feeling that you had studied well before the exam, but you did not remember the answer in the exam? Yes, this is the common you can find. The second, after a long time, you meet your old full mate, but you don't remember his name. Third one is, you hear your favorite song tune, but you don't remember the words. ये सारी चीजों में एक कॉमन चीज है, that is we are forgetting something. हम कुछ चीजें भूल रहे हैं. What is that the things? ऊपर आंसर, सेकंड में नाम और थर्ड में लिरिक्स और द ट्यूनिंग. ठीक है, वर्ड्स जरूर. So all these are the experiences of forgetting. Let's understand now what is forgetting. So forgetting is simply the inability to remember the thing which we want to remember at the moment. In other words, forgetting is the failure to retrieve the material from our long term memory, which we had already stored. हम भूलते कौन सी चीज है? जो चीज हम याद किए हुए रहते हैं, ठीक है. बट जो चीज हम याद नहीं किए हुए रहते हैं, उसका भूलने का सवाल ही नहीं होता है. सो जस्ट सेकंड स्टूडेंट्स.
हम्म। सो यहाँ पे वही चीज बोला है कि फॉरगेटिंग ऐसी चीज है जो हम इनेबिलिटी, इनेबिलिटी मीन्स जो उस टाइम के लिए, माइट बी एन टेम्पररी और परमानेंट के लिए, हमारे पास एबिलिटी नहीं है कि वो चीजें हम याद आ रही है हमें, ठीक है। विच वी वांट टू रिमेम्बर, हमको याद करना है, बट वी कांट रिमेम्बर दैट पार्ट, ठीक है। इन अनदर वर्ड, फॉरगेटिंग इज द फेलियर। फॉरगेटिंग का मतलब होता है कि डेट वी आर फेलियर टू रिट्रीव, मतलब टू टेकिंग बैक अगेन द दैट, जो चीजें हम याद करना चाह रहे हैं उसको रिट्रीव नहीं कर पा रहे हैं। द मटेरियल फ्रॉम अवर लॉन्ग टर्म मेमोरी, जो चीज हमारे दिमाग में लॉन्ग टर्म से थी और एक टाइम क्या हो रहा है हम उसे भूल रहे हैं। when exactly we need that one, we have already stored किया हुआ चीज हमें याद नहीं आ रहा है। दैट इज द फॉरगेटिंग। द pioneer of experiments on forgetting was the Hermann Ebbinghaus. He created the several list of the nonsense syllabus. Nonsense syllabus is this set of three alphabet, two on both the sides, like consonant, and middle one is vowel, like the jets, WL, MUV, etc., and learn it. So these are the nonsense syllables. ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है? He checked his own recall and various period of time. मतलब नॉनसेंस सिर्फ इसका मतलब होता है जिसका कोई मतलब नहीं होता, कोई भी वर्ड्स है विदाउट मेकिंग एनी सेंस, ठीक है। तो ये दिया गया है रिकॉल करने के लिए या लर्न करने के लिए। He found out that he forget the most of whatever he had learned in the first 20 minutes, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट 20 मिनट्स में अगर आप देखेंगे तो दो चीजें आपने लर्न की हैं वो चीजें आप भूल जाओगे। दैट इज द 40%। फॉलोइंग आफ्टर एन आवर, 1 घंटे के बाद 20% टिल 9 आवर्स, 20% और 9 घंटे के बाद 10% अगेन। अगेन ही फॉरगेट द फर्दर एंड आफ्टर 1 डे, 1 दिन के बाद पूरा, he could recall only 30% of the material he had learned. मतलब 100% में से ओनली 30% ऑफ द जो स्पेलिंग्स था वो उसे याद होगा। आफ्टर दैट हिज recall was steady for a long period of time. So this experiment proved that we forgot most of the thing we learned in a short span. Therefore, you should revise the study material on the same day again.
when you first starting, sorry, when you finish studying is to avoid forgetting. ठीक है, इसलिए कोई भी चीज़ आप जब पढ़ते हो उसको आप रिवाइज करो उसी सेम दिन, डोंट पोस्टपोन फॉर दी नेक्स्ट डे। और जब भी आप पढ़ के ख़त्म कर दोगे उसे, तो इट इज़ एन बेनिफिट फॉर यू। आप देखोगे कि आप उस चीज़ को जल्दी भूलोगे नहीं। ठीक है। नाउ लेट्स सी द वेरियस कॉजेज ऑफ फॉरगेटिंग। कौन कौन से अलग रीजन है? And how we can see some memory improvement. Now the causes, एक मिनट। तस्मिया, तस्मिया शेख, VW। तस्मिया, अनम्यूट करो। तस्मिया, can you unmute yourself? और कौन अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को? अद्वैत, अर्चिशा, students who can unmute yourself. ऋषभ, सुजिता, तनु, raise your hand. Can you unmute yourself or not? Can you unmute yourself or not? Yes, ma'am. हाँ, सुजीता राइट। सुजीता, स्टार्ट करो बेटा जरा रीडिंग तो, यहाँ से करो जहाँ फॉरगेटिंग से। Activity 5. Think of the following situations. Have you ever experienced the feeling that you had studied well before the exam, but you did not remember the answer in the exam? After a long time, you need your old schoolmate, but you don't remember his name. You hear your favorite song tune, but you don't remember the words. All these are the experiences of forgetting. Let's understand now what is forgetting. Forgetting is simply the inability to remember the things which we want to remember at that moment. In other words,
Forgetting is the failure to retrieve the material from our long-term memory which we had already stored. The pioneer of experiments on forgetting was Hermann Ebbinghaus. He created several lists of nonsense syllables. Nonsense syllable is set of three alphabets, two on the both the sides are consonants and middle one is vowel, like get, swirl, move, etc. and learnt it. He checked his own recall at various periods of time. He found out that he forgot most of whatever he had learned in the first 20 minutes, 40%. Following that, after 1 hour, 20%, till 9 hours, 10%. Again he forget further, and after one day he could recall around 30% of the material he had learned. After that, his recall was steady. For a long period of time, the experiment proved that we forget most of the things we learn in a short span. Therefore, you should revise the study material on the same day again when you finish studying it to avoid forgetting. कंटिन्यू करो बेटा, ये भी इसको कंटिन्यू करना, जरा स्लो रीड करो, ठीक है, आराम से स्टार्ट। Now let's see various causes of forgetting and how we can use some memory improvement techniques to reduce the forgetting. Causes. If you keep a book on a shelf for over 6 months without touching it, what will happen to that book? How will it start looking? You will realize that after 6 month period there will be dust on it. That book similarly, our memories fade out. When we do not use them for a long period, this traces that decade over a period of time. If they are not used and so we forgot. Have you ever played the game Chinese Whisper? What happens in that game? Does the message remain the same as it was told by the first person who started the message? You can try it in the class or with your friends. You will see that the message in the beginning and the message which is given by the last person is not the same. What do you think? Why does this happen? It is because we have a tendency to distort our memories. The game Chinese is the crude example of this type of forgetting. Some researchers believe that our memory traces are not decayed, but they are distorted over a period of time, and forgetting occurs. Have you gone through some similar situations in your day-to-day life? Think you studied psychology yesterday and you studied sociology today. Now you end up forgetting either psychology or sociology. This kinds of forgetting is due to interference of material. Some researchers believe that we forget due to the interference of the material with each other, which we learn one after the other. There are two types of interference, namely retroactive interference and proactive interference. Retroactive interference, as the name suggests, retro means backward. Interference, it is the partial or complete forgetting of the previously learned material due to the new memories we get mixed up with the older ones. So, in the earlier example, if we forget psychology due to study of sociology, it will be due to proactive interference. Proactive interference, as the name suggests, pro means forward interference. It is partial or complete forgetting of the newly learned material due to the old material. So, in the example given, if we forgot sociology due to the study of psychology, it will be proactive interference. Retroactive and proactive.
एक मिनट है। सुनीता, ये इतना कंप्लीट करने दो कॉस्ट, फिर रिएक्टिव और प्रोएक्टिव रीड करते हैं। सो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं अभी? नाउ लेट्स सी द वेरियस कॉजेज। कौन कौन से अलग अलग कॉजेज हैं कि फॉरगेटिंग के पार्ट होते हैं। नॉर्मली वी नो अबाउट, हम चीजें भूलते क्यों हैं? कॉमन मतलब क्वेश्चन से विद कॉमन आंसर्स, कि जो चीजें हम बार बार नहीं देखते हैं, जो चीजें डिस्कस नहीं होती है, वही चीजें हम बार बार भूल जाते हैं। ठीक है, तो रिहर्सल जो बोलती हूँ, बार बार पढ़ाई करना, बार बार एक ही चीज को प्रैक्टिस करना, माइंड भी कुकिंग क्यों ना हो और डांस क्यों ना हो, या कोई भी चीज है, द रिहर्सल और प्रैक्टिस ये फॉरगेटिंग को अवॉइड करता है। नाउ causes, this is a few examples. If you keep a book on a shelf for over 6 months without touching it, what will happen to that book? How will it start looking? And what will happen to that book? You will realize that after 6 month period, there will be dust on uh, dust on the book. Similarly, your memory fade. धीरे धीरे अपनी जो मेमोरी है वो फेड होने लगती है, एंड वी डोंट यूज देम फॉर लॉन्गर पीरियड। हम अपनी मेमोरी को कभी भी ज़्यादा लंबा टाइम तक उसको नहीं रख सकते, आफ्टर आफ्टर बाय बीइंग एट वन एज। ठीक है, so these stresses get decay over a period of time if they are not used, and so we forget. Now second we will see is about the gauges. Have you ever played a game, Chinese Whisper? What happened in that game? Does the message remain the same as was told by the first person who start the messages? ठीक है, नाउ यहाँ पे चाइनीज विस्पर क्या होता है? आपके कान में कोई कुछ और बोलता है, और उसके बाद में फर्स्ट आते आते तक वो चीज़ें बदल जाती है। क्या वो मैसेज सेम होता है, कि लोग या तो उसको अपनी तरीके से लेते हैं? तो यू कैन ट्राई इन योर स्कूल एंड कॉलेजेस, दिया हुआ है। ठीक है, so you can try it in the class with your friends. You will see that the message in the beginning, hmm, एक मिनट है friends. So what do you think why this happened? It is because we haven't a tendency or distort our memory. So the game Chinese Whisper is the cute example of this type of forgetting. So some researchers believe that our memory traits are not decay, but they are distorted over a period of
टाइम एंड फॉरगेटिंग ऑकर्स। मतलब चीज़ें हमारे दिमाग में है, बट उसको रिहर्सल नहीं कर रहे हैं, हम उसको वापस से वो चीज़ें हम रिपीट कर रहे हैं। तो हमारी मेमोरी से धीरे धीरे वो चीज़ें क्या हो रही है, जंग पकड़ रही है। ठीक है। जहाँ आप हम बोलते हैं अगर हम कोई चीज़ रिहर्सल नहीं करें, कुछ नहीं करें, तो इट्स गोइंग टू बी जैम्ड, एंड याद करने में, उससे वापस से रिमेम्बर करने में इट विल टेक अ लॉट्स ऑफ टाइम। And third line, or sorry, third sentence. Have you gone through some similar situation in your day-to-day life? Hmm. So in day-to-day life thing, you study psychology yesterday. कल आपने क्या पढ़ा था? Psychology. And you study sociology आज. Now you end up forgetting either psychology or sociology. This kind of forgetting in sociology, the kind of forgetting is due to interference of material. Some researchers believe that we forget due to the interference of the material with each other, and which we learn one after the other. एक एक करके हम उसको पढ़ते रहते हैं, भले वो साइकोलॉजी हो या तो सोशियोलॉजी हो। But after the sociology, again we revise the psychology. Okay. So there are two types of interference, namely the retroactive interference or proactive interference. Okay. Sujita, yes, Sujita. Okay. Yes, Sujita. Sujita, unmute करो. Sujita, are you there? Yes, sir. Unmute. हाँ, कंटिन्यू करो बेटा. Retroactive As और the ये. as the name suggested, retro means backward interference is the partial or complete forgetting of the previously learnt material due to the new memories which get mixed up with the older ones. So in the real example, if we forget psychology due to study of sociology, it will be due to retroactive interference. Proactive interference, as the name suggested, pro means forward interference. It is the partial or complete forgetting of the newly learnt material due to the old material. So in the example given, if we forget sociology due to study of psychology, it will be proactive interference. Retroactive interference and proactive interference, learning and testing. Retroactive interference, learn A, learn B, memory loss for A. New learning interference with old memory. Proactive, learn A, learn B, memory loss for B. Old learning interference with new memory. Yes, go ahead. Motivated forgetting. It is a behavior in which people may forget unwanted memories either consciously or unconsciously. Consciously. It is also called as a conscious
coping strategy, but it should not be confident with defense mechanism. There are two levels of motivated forgetting: repression. Sigmund Freud's psychoanalytic model states that we subconsciously push unwanted thoughts and memories into our unconsciousness. Person thinks that such repressed memories are completely forgotten. For example, a girl who had experienced sexual abuse during childhood may completely forget about it, but she may have difficulty while forming romantic relationships. Thought suppression. It is a conscious effort where we forget the memory of unwanted incidents, the experience of our lives. For example, if your friend has experienced a breakup recently, he may change the topic if you want to discuss about it. Thought suppression can be time consuming and quite difficult also, because such suppressed thoughts will reoccur, so your friend may try to suppress the thought about his ex-girlfriend, but he may not be successful as she is your classmate. Techniques of improving memory. After knowing the reason of forgetting, now let us move ahead with how we can improve our memory. The keyword method. The keyword method is an effective method for remembering definitions, learning foreign language vocabulary with their meaning, etc. Any two different pieces of information can be linked together by using the method. Example, in Japan, ki means tree. A person can remember similar sounding word like key from English and can remember as there is a key on the tree. Encoding specificity. specificity. The encoding specificity of memory, Tulving and Thompson, 1973, provides information about how context and affect memory. According to this principle, memory is improved when information available while learning is also available at the time of to recall. Method of Loci. It is creating imaginary routes so that things can be remembered in better way. Example, things can to be picked up while going home or steps to solve mathematical problems. By using this method, a person with average intelligence also can reform or route clear things in such a way that person can remember associated images for long periods. There are the memory tools which help you to remember words, information or concepts. Mnemonic in Greek means of memory of or related to memory. Mnemonics will include acronyms of first letter techniques such as WIBGYOR, which includes color of rainbow. It will also include visualization like imagining face of a friend to remember your. Done, Sujita? यहाँ तक एक बार पॉइंट कर लो, then I'll explain. Sujita? With him or her, another example is you don't respect the same mistake if you remember the punishment you got before. Another technique is checking when where you can place large information into small chunks. For example, Veena's nervous mother was running slowly and peacefully. This could be divided into
chunks or seven primary mental abilities given by Thurston. The sentence includes verbal numerical memory, word fluency, reasoning, spatial and pre- perceptual speed as factors of intelligence. Practice and rehearsal. Relearning the same material for a number of Wait, times. Rita, wait, Rita, wait. Let me explain the previous one पहले. ठीक है? फिर इसके बाद प्रैक्टिस और रिहर्सल हम करते हैं. Okay? Now, retroactive मतलब क्या होता है कि as the name suggested, the retro means the backward. ठीक है? पुराने, पिछले लोग, हाँ? या पिछली चीजें. तो इट इज द पार्शियल और कंप्लीट फॉरगेटिंग. यहाँ पे आप वो चीजें पूरी तरीके से भूलते भी नहीं हो, पूरी तरीके से आपको याद भी नहीं रहती है. So of the previously learned material due, due to the new memories which mixed up with the older one. ठीक है? जो पुरानी सोच होती है, जो पुराना हमने सोचा हुआ है, उसको हम न्यू में क्या करते हैं, एडप्ट करते हैं. So in the early example, if we forget the psychology due to the study of psychology, it will be due to reactive interference. तो ये भी एक रीजन होता है. Now, second, that is the proactive. As the name suggests, the pro means forward interference. आने वाले टाइम. So it is the partial. पूरे partial या तो आप complete forget हो गए हो नए नामों के. ठीक है? Due to the old material. So in the example given, if we forget sociology due to the study of the psychology. See the diagram. Reactive and practical. See, learning, that is reactive. Learn A, learn B. Then money loss for A. New learning interference in old memory. Yeah. And the second, in C, learn A to the learn B. Order exam, that is memory loss for B. Old learning interference with the old learning interference with old memory. Sorry, with new memory. ये चीजें आपकी हैं दो टाइप का रेट्रो और प्रो. तो read this one because it's very important. So pause and this two examples. जल्दी एक बार आप एक बार देख लो, रिवाइज करो 2 मिनट. रिवाइज for 2 minutes. Revise these two parts, then I'll go ahead.
यस स्टूडेंट्स, अब तो हो गया होगा ये। वो फॉर द नेक्स्ट पेज के लिए चलते हैं। ठीक है। Now we have seen till ABC. Now the other type is the motivated forgetting. Okay. It is a behavior in which the people may forget unwanted memories, either consciously or unconsciously. It is called a conscious coping strategy, but it should be not confused with defense mechanism. अगर आप कोई चीज पढ़ते हो या आप कोई चीज याद करते हो, ठीक है, एक मिनट। हाँ। हाँ। सो यहाँ पे हम मोटिवेटेड फॉरगेटिंग में क्या देखेंगे कि हम वो चीजें भूलते हैं या वो चीजें हम याद रखते हैं जो हमको पता होता है। जैसे अनवांटेड चीज होती है बहुत सारी, चलते फिरते रास्ते में किसी से झगड़ा करना या किसी से ऐसे ही बात कर लेना, तो हमको नहीं लेना देना है कि कौन है क्या है, वो चीजें हमें याद भी नहीं रखनी है। ठीक है। तो कॉन्शियसली मतलब होता है कोई चीजें जानबूझ के भूल जाना, और कोई चीजें अनकॉन्शियसली हम भूल जाते हैं कि, लेकिन इम्पोर्टेंस तो दोनों ही हमारे लिए नहीं होती उस टाइम पे। सो it is called as a conscious coping strategy, but it should not be confused with defense mechanism. ये डिफेंस मैकेनिज्म से मिलता जुलता है, तो वो हम उसमें लाइक कंफ्यूज ना हो जाए। तो इसके भी दो टाइप्स है, दैट इज द रिप्रेशन एंड थॉट सप्रेशन। हम्म। सो रिप्रेशन, सिगमंड फ्रीड, ठीक है, psychoanalytical model states that we subconsciously push unwanted thought। यहाँ पे जो भी अनवांटेड थॉट है, ठीक है, वो चीज हमको नहीं चाहिए होती है। तो into our unconscious minds, person think that such repressed memories are completely forgotten। तो हमें वो चीज चाहिए ही नहीं होती है। We don't have to put in our mind, वापस से वो चीज हमें याद नहीं करनी है, या तुम बोल सकते हैं। ठीक है। माइट बी एन वांटेड तरीके से या अनवांटेड तरीके से। For example, a girl who had experienced this sexual abuse during the childhood may completely forget about it, but she may have the difficulty while forming romantic relationship। वहाँ पे बचपन में उसके साथ अगर कुछ हुआ है, तो फिर अगेन व्हेन शी विल बी ग्रो अप, तो शी विल बी लाइक, उसे नहीं ठीक कोई चीजें लगेगी आगे ऑन द सेम थिंग्स जो भी है। ठीक है। सो शी विल ट्राई टू फॉरगेट अबाउट इट। सेकंड होता है थॉट सप्रेशन।
तो यहाँ पे थॉट सेपरेशन देखेंगे. इट इज अ conscious effort where we forget the memories of unwanted incident and experience of our life. For example, if your friend has experienced a breakup recently, he may change the topic if you want to discuss about it. So thought the separation can be time consuming and the quite difficult also because such separation thoughts will reoccur. फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ जैसे कि कोई फ्रेंड की गर्लफ्रेंड है और उसका ब्रेकअप हो गया है. सो रियली लाइक कि बहुत एक दूसरे को लाइक करते थे बहुत सब कुछ, लेकिन अब एक टाइम के बाद में ब्रेकअप होने के बाद में एक दूसरे का नाम भी नहीं सुनना चाहते हैं. तो दिस इज कॉल्ड सेपरेशन टाइम, जहाँ पे उसको वो चीजें वापस से याद नहीं करनी है, उसको वो थॉट भी अपने दिमाग में नहीं लेके आना है. So your friend may try to suppress his thought about his girlfriend, but he may not be successful as she is your classmate. ठीक है. लेकिन जब आप डेली देखते हो कोई चीजें, वही सेम चीजें आप याद रखते हो, तो आप चीजें भूल नहीं पाओगे. ठीक है. तो दिस इज सी थॉट सप्रेशन. एक बार स्टूडेंट्स रिप्रेशन अच्छे से देख लो. थॉट सप्रेशन और रिप्रेशन, this is the part of the motivated forgetting part. फटाक से देखो. Then I'll start with the technique. Okay.
Now we'll go for the technique. Okay, the technique of improving memory में देखेंगे. After knowing the reason of forgetting, now let us move कि कौन कौन से पहले हमने तक देख ली कि कौन कौन से रीजंस हैं बोलने के. ठीक है, अब हम देखेंगे कि हाउ टू इम्प्रूव द मेमोरी. So there are few things with the help of that we can improve our memory. क्या वो चीजें? So नंबर वन पे है द कीवर्ड मेथड. सेकंड है encoding. The keyword method first one. The second is encoding specificity. Next method of lossy, locky is करेंगे. Then mnemonic devices. Okay, तो first one देखेंगे the keyword method का. The keyword method is an effective method for remembering the definition. Okay, so learning foreign language vocabulary with their meaning, etc. So any two different pieces of information can be linked together by using this method. Example, in Japanese, like key. Key का mean होता है tree. ठीक है. So in our word it is an tree, लेकिन वहाँ का मतलब होता है key. तो ये चीज हमको add में we have to add these things. मतलब वो short forms हमको बनाने होंगे. So a person can remember the similar sounding जैसे की एंड उसका ट्री का मतलब होता है चाइनीज में की. और यहाँ पे हम की का मतलब होती है चाबी. ठीक है, तो इट वाज साउंडिंग लाइक अ की. सो इंग्लिश एंड कैन रिमेम्बर एज देयर इज अ की ऑन द ट्री. यही हर चीज रखनी पड़ेगी. तो डेट इज कॉल्ड द की वर्ड मेथड. हम नॉर्मल टाइम पे भी ऐसे ही कीवर्ड्स बनाते हैं. ठीक है, याद रखिएगा वो चीज. सेकेंड वन इज the encoding specificity of memory. Then Tulving and the Thompson in 1973. They provide the information about how context can affect memory. So according to this principle, memory is improved when information available, while learning is available at the time to recall. तो यहाँ पे एनकोडिंग स्पेसिफिसिटी किसने डिफाइन किया है? टल्विंग एंड थॉमसन ने 1973 में. ठीक. इन्होंने बोला है कि इस प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन कि किस तरीके से जो कॉन्टेक्स्ट होता है हमारी मेमोरी को अफेक्ट करता है. सो अकॉर्डिंग इज दिस प्रिंसिपल मेमोरी इज इम्प्रूव्ड. हम अपनी मेमोरी जो है इम्प्रूव कर सकते हैं जब हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन होती है. ठीक है, while learning available at the time to recall. If for example you are reading something else. ठीक है, आप अपनी चीजें कुछ और पढ़ रहे हो लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि यू हैव टू एड अप ऑन द पॉइंट. आपको और चीजें करनी है तो देयर शुड बी इन द मटेरियल. आप जब रीड कर रहे हो आप कुछ पढ़ रहे हो तो मटेरियल की ज्यादा चीजें आपके पास होनी चाहिए. सो ये आपको क्या करवाता है कि रिकॉल करवाता है. बहुत सारी चीजों में से आप कुछ चीजें ऐसी याद रखते हो जो चीजें आपको वापस से एक लिंक बनाने के लिए हेल्प करती है. ठीक है, नाउ विल सी द मेथड ऑफ दिस लॉकी. दिस लॉकी
एक मिनट हाँ. Just a second. So we were on the method of the Nasti. It is creating imaginary route that the things can be remembered in better way. For example, things to be picked up while going home or step to solve the mathematical problems. So by using this method, the person with average students के जो लोग होते हैं, they can form a route. वहाँ से वो अपनी route खुद याद रखते हैं. So club thinks in such way that the club means here the things which can be remembered. Sarah wrap up कर यहाँ. A person can remember associate image for longer period. तो यहाँ पे जो भी रहते हैं अपने रास्ते के हिसाब से कुछ चीजें ध्यान रखते हैं. ठीक है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, सारी चीजें दैट इज द मेथड ऑफ द लॉकी, और वो हम लॉन्ग टर्म के लिए याद रखते हैं. नाउ नेक्स्ट वन इज द mnemonic devices. These are the memory tool which help you to remember words. ये मेमोरी टूल आपको क्या याद रखती है? कोई भी वर्ड्स, इंफॉर्मेशन और कंसेप्ट. ठीक है. सो mnemonic in Greek mean of memory or related to memory. Mnemonic will include the acronyms for first letter technique, such as the VBR, which include the color of rainbow. That is called the abbreviation actually. It also includes the visualization like imagine face of friend to remember your meeting with him or her. Another example is you don't repeat the same mistake. If you remember the punishment, अगर आपको याद रहेगी तो आप वो same mistake वापस से नहीं करोगे. So another technique is chunking where you can place the large information into small chunk. For example, Vina nervous mother was running slowly and peacefully. It could be divided into chunk for seven primary mental abilities में हम इसको divide कर देते हैं. So the sentence include the verbal, numerical memory, word influence, reasoning, then spatial, and the perceptual speed of factor of intelligence. ठीक है. तो ये सारे जो आपको बताए गए एग्जाम्पल्स ये सब इसी के हैं. वेयर यू कैन मेक योर memory and intelligence as much as long. ठीक है. So students will meet to the next lecture. ठीक है. Bye everyone. Take care.